Oh, chef. Chala is here. So we are putting now one by one chala like this to the curry. गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ मंडे और मैं मंडे में यहाँ पे सुबह सुबह क्या कर रही हूँ मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि कल रात से मेरे को चल रखा है थोड़ा सा बुखार और मैं वॉमिट भी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्टमक पेन भी है, फूड पॉइजनिंग हो गई है शायद। तो मैं और अभिराम दोनों को सेम कंडीशन है, इसलिए हम यहाँ पे आज रेस्ट ले रहे हैं और आप सबको दिखाते हैं कि घर पे क्या चल रहा है। आज घर पे हूँ तो सोचा थोड़ा ब्लॉग कर लेती हूँ। वैसे पेट का कंडीशन बहुत ख़राब है, पेट ख़राब हो रखा है मेरा, लूज़ मोशन गाइस, लूज़ मोशन। लेट्स सी सब लोग क्या कर रहे हैं। केरला स्टाइल फिश करी बन रहा है यहाँ पे, होम फूड ओनली, क्योंकि हम दोनों का है पेट खराब, सो ओनली होम फूड। मोस्टली मैं नहीं खाऊंगी, इन लोग खाएंगे, गेस्ट भी आए हुए हैं घर पे। और यहाँ पे फिश ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दिया है। This is a mixture of the secret masala. I can't reveal this. This is what? The mixture of masalas. So you will adding this. Adding this. Add in the fish curry last. Okay. Haldi, chili powder, some. ये है अम्मा स्पेशल रेसिपी, ट्रेडिशनल केरला स्टाइल फिश करी। अभिराम, आरू, आरू, हाय आरू, गुड मॉर्निंग आरू, गुड मॉर्निंग। सब सुबह सुबह लग गए हैं, मेहमान भी आए हुए हैं। एक्चुअली घर पे जितने लोग आए हुए हैं सबका पेट खराब हो चुका है गाइस। मैंने आज नहाया नहीं है अभी तक, I didn't take bath yet. That's why same dress. Oil. थोड़ा सा What is this style? Masala. Aru masala. Magic masala. Okay. Now the masala's green You can taste. feel the aroma. What we have to do? We have to mix. Come. The real flavor of macaroni. Wow, see the color. See the color. Ooh, little lights. Bellam. Salt गया पानी में। हाँ, this is for the curry. Okay, this fish is for curry, then this fish is for fry. So curry we need Okay. छोटे pieces. Curry छोटू piece and fry full So that we fish. can eat separate Full section. fish. After frying you will get one piece like even. Oh, grab it, man. okay. So इसको यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिया है, मतलब ये थोड़ा उबल जाएगा तब इस पे हम डालेंगे ये वाला फ़िश जो रखा हुआ है, ठीक है। ये फ़िश हम इस पे डालेंगे, ये जब उबल जाएगा उसके बाद इसके साथ हम बनाएंगे फ्राइज़, ट्रेडिशनल केरला स्टाइल फ़िश करी एंड फ्राइज़। आपको मैं एक फ्लावर दिखाती हूँ, बहुत क्यूट सा है। इसको मैंने रास्ते से लाके हमने लगाया था, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। कितना प्यारा सा है ना भाई, फोकस हो जा, फोकस नहीं हो रहा है गाइस, दूर से ही देख लो। व्हाट टू से करी next stage, let's see. Now this started. This has started. Wow. Chala is here, so we are putting now one by one chala like this to the curry. Huh? Why meow meow? Fish, that's why he's calling meow meow.
Traditional Kerala style fish, chala fish curry. This fish name is chala. Okay. Now हमने इसको भर दिया है डायरेक्ट ऐसे ही, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा इन लोग ऐसे फ्राई क्यों नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी फ़िश का जो शेल है बहुत हार्ड है, तो इसमें कोई फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है. So let it be like this for some time. All already curries and everything already prepared for the lunch. Master chef is here. Now she is preparing for what, Amma? So happy. So happy. So happy. Then dinner. Amma, which curry next? Kakarchi fry. Okay, now the next is kakarchi fry. She is here. Kakarchi is here. I will show you how to chop. After boiling the kakarchi, you have to cut onion, garlic, chili, ginger. Okay, boss. Proper way to cut the onions. वाओ वाओ. नेक्स्ट मास्टर शेफ में आप अभिराम को देख पाएंगे. अभिराम इज गोइंग टू बी ऑन मास्टर शेफ. ओह, शेफ, मास्टर शेफ. Such a design. Wow. Pro. Abhiram the pro in the comment section, guys. I'll show you how to cut the ginger, okay? Okay, ginger also have a tray. Mommies, aunties in the world, please look how to cut. Abhiram will teach you guys. Yes. Ginger time. Ginger. Oh, such a slice. Ginger slice. Oh, scendete me. Oof. Pro. अड्डीबोली. Blah 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 blah. हमें वेलतुल्ली कड़ा रहा है. मीन लेकर नहीं. Wow. This is typical Malayali family, guys. पाले नहीं बंदे रख पाले. ये अच्छा में दूध चाले. यार वाकई नहीं. Those who think he is very shy person, look, actually the truth is here. Come on, guys. One coconut, two contestant. See, man. It's our coconut chulling area. So the coconut. Oof. Hey, be very careful. Yes, the baby is inside. Come. Come. Okay, see size. Coming. Macaroni. Now we had put this sharp edge into Okay. this corner, so then only he will come out. You see. Hey, hand will go a bit up. Now we have to come. So see the difficult twist. Yes, the baby is out. Simple. Don't do so style. You fall down on the leg and all, then done again hospital. Just now in the morning I came from hospital, stomach pain and all. Bro. Hey bro, Nothing is going to happen. I'm a mallu. Natural stone up here. Tapak, it will come to my eyes. No. Traditional way to. Come. Keep it there, but it's literally to me. Oh, very less water. Very less, not all fall down here. It's a traditional way. Thank you for the scene. नारियल पानी थोड़ा सा मिला है. How to grab him out, say, okay. Coconut water good for stomach. Thank you. Since Oof. If
If you go to my home, all will love you so much the way you cut the coconut, because in my home also every day coconut needed. Every time we also cut, like we give coconut and all in the prasad na. I like this one. So Here also prasad they will. loving it. That's why I married to him actually. I just need to blog and he need to cook. That's the main reason. It's ready. Fish curry is ready. Wow, the oil is coming little up. It's like a star. Whoa, man. Okay. Nice. Just show this. This is the. It's okay. No. You just taste it. Oh my gosh, it's pretty hot. Very tasty. ककड़ची मेकिंग स्टार्ट गाइस. हमने कढ़ाई पे जितना भी काट के रखा था ना, प्याज वगैरह सब डाल दिया. These are the coconuts he cut. I went to washroom and he cutted everything. Wow, smells fun, man. Making the onion browning, you can add little salt. Okay. Curry leaves added. It's again getting brown color. पूरा नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ. अब लंच खाने का वक्त आ चुका है. जाके लंच करती हूँ. पेट थोड़ा सा दर्द हो रहा है. कोई नहीं, चलो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं. पेट में थोड़ा दर्द तो है. इट्स फाइन. लेट्स गो एंड हैव लंच. देखते हैं टेस्टी फिश करी कैसे बना है. कड़छी रेडी. फिश फ्राई going on.
Chala fish fry.